Good morning, students. Nowadays, we are studying the lesson should wizard hit mommy? Okay, and in our previous video, we had studied that Roger Skunk went to the little white house. That is the wizard's house, and he had to cross the dark wood and the swamp, and then he met with an old man. He had a long white beard and pointed blue hat. And Roger Skunk told the wizard how all the little animals ran away from him, and he smelled very bad. And when they went inside the house, so their all magic things were jumbled together in a big dusty heap. And okay, so what happened after that, we will study in the next para. And Roger Skunk said to the wizard that change please change my smell to the roses. And the wizard cast a spell on magic spell on him, and he spoke some lines, and these are the lines: abracadabra, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Roses, boses, pull and ear, Roger Skunk, you never fear, bingo. And so let's move the next para. Uh, he paused as rapt expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin. An expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail party. He paused a rapt expression. He paused. He means Jack. Jack paused. Paused means stopped for a short time. He stopped as a rapt expression widened out from his daughter's nostril, because he saw some facial expression from his daughter, and he saw the facial expression, a rapt expression means the she was engrossed. Expression means the way of expressing. She was so engrossed in this story. And her nostril means the nasal passes were widened, and forcing her eyebrows up, and her eyebrows was up and lower lip down in a wide noiseless grin. Grin means smile. And expression in which Jack was startled, and Jack was very surprised to see those expressions on the face of his daughter. Why he was surprised? Because he recognized his wife feeling pleasure at cocktail party, because those types of expression he saw at the face of his wife face, when his wife went to the party and cocktail parties, and there she show the pleasure, the finning pleasure means finning means pretending to show. Where his wife pretend the pleaser. So those types of expression used to come on his wife's face, and the exact those expressions were coming on the face of his daughter too. So he was surprised, and he stopped for some time, and all of a sudden he whispered mean he spoke in very low voice. The whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. Roses. Roger Fish cried, and the wizard said, very cranky, that will be 7 pennies. And then he started the story, and he said the whole inside the wizard's house. When he said bingo, and after that, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses, because skunk wanted
and the rose smell. So the wizard make his smell roses of roses. Jack said, Roger Fish cried. Roger Fish cried with joy, and the wizard said, very cranky. And wizard said, very cranky. Cranky means very whimsical, very strangely. He was very cranky. He was sometime you can say that the cranky means that the mad type and the strangely behavior type. That will be 7 pennies. He demanded 7 pennies from the Roger skunk. But Joe said, Daddy, and Jack said, What? Roger skunk, you said Roger fish. She noticed. She was so engrossed in the story that she noticed every word that is spoken by her father. So her father said here, here her father said, Roger fish cried. He did not speak Roger skunk. In the place of skunk, he said fish. And she noticed, and she said that Roger skunk, not fish, Daddy. Yes, skunk. He admitted that. And you said Roger fish. Was not that silly? He said. She said, very silly of your stupid old daddy. The daddy accepted his fault, and he said, very silly of your stupid old daddy. Where was I in the story? Well, you know about the pennies, she said. Say it. Okay, he said. Roger Skunk said, but all I have is 4 pennies. But Roger Skunk had only 4 pennies, and the wizard demanded 7 pennies. So, what happened now? And he began to cry. And then Roger Skunk began to cry. Joe made the crying face again, but this time without a trace of sincerity. And Joe made crying face again when Jack said that Roger Skunk started crying because he had not 7 pennies, and wizard demanded 7 pennies, and he had only 4 pennies. What he would do? He began to cry, and Joe was so emotional, and she was so involved in the story, and she loved the character in the story, so she made a crying face again, but this time without a trace of sincerity. But this time the crying face, the expressions were not trace means the sign, so there was not a sign of sincerity means honesty. Okay, this annoyed Jack, and this thing annoyed Jack. Jack was annoyed. Jack was angry. Downstairs, some more furniture rumbled. Claire should not move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. And downstairs, some more furniture rumbled. Rumbled means made a thundering voice. Some voice, some sound had come from the downstairs, because Jack's wife was doing some work there with furniture. She was painting the furniture, and she was rumbling the furniture. And he knew this thing. Jack knew this thing, that the Claire should not move heavy things, because she was 6 months pregnant, and it would be their third. It would be their third means it would be their third child. So they have two child. One is Joe, and the other a boy, and now it was the third one. Okay, so the wizard said, oh, very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. And so the Jack moved forward in the story, and he said that, so the wizard said, when Roger Skunk was crying, then wizard
directed him to the well. And he said that go to the end of the lane and turn around three times and look down. The magic well was there, and there you will find three pennies. Hurry up, quick, go. So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around three times, and there in the magic well were there, and three pennies were there also. So he took them back to the wizard and was very happy. And then Roger Skunk took all the three pennies and he gave those three pennies to the wizard. And then he went, he was so happy and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. And then he ran out into the woods where his other little friends were there, and they gathered there. They were gathered there and around him, and they played with him because he smelled so good, the smell of roses. And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, soccer, and pick up sticks. All these are the name of the games. So they played a lot of games there. With he played with his friends, and now they also enjoyed with him because he had a good smell. And they played different types of games, and these are the many names of the games: tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, soccer, and whatever. And pick up sticks. What's pick up sticks? Joe asked a question because she knew all the games, but pick up sticks she did not know, and she asked quickly. Immediately, she asked the question, "What is pick up sticks?" It's a game you play with sticks, her father said. Like the wizard's magic wand? And she said that the sticks like the wizard's magic wand? Kind of, he said. Yes, this kind of. And they played games and laughed all afternoon, and then it began to get dark, and they all ran home to their mummies. And after that, when they played there, and after the playing games they laughed all afternoon and they enjoyed too much. And when it began to get dark, when in the evening time, they all ran home to their mummies. Mummies means mothers, to go to their mothers. And the next para, Joe was starting to fuzz with her hands and look out of the window at the crack of the day that showed under the shade, and she thought the story was all over. And here when when the Roger skunk went to home, and so Joe thought that the story was over, and she started to fuzz. She started to fuzz. Fuzz means give importance to unimportant things. It means now she was not so engrossed in the story because she thought that the story was all over. So she was looking here and there, and she was looking out of the window. And there was the crack of the day, start of the day that showed under the shade, under the curtains. And she thought the story was all over. Okay, Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now, Joe, are you listening? So Joe get annoyed there, and he did not like the women's this type of quality, that they when they took anything for granted. I mean, they did not notice whatever was saying to them. He liked them apprehensive, hanging on the words. Apprehensive means the doubtful, hanging on means the continuing the same thing. Okay, so now he was angry and he said to the Joe, "Now, Joe, are you listening or not?" He was angry to this type of behavior of Joe. Yes,
She said, "Yes, I am listening, because this is very interesting." Roger Skunk's mummy said, "What's that awful smell?" And now there is another turn in the story, because this is very interesting story. And her father said that Roger Skunk's mommy said, when Roger Skunk reached at the home, and his mummy noticed him, and his smell, new smell, the roses smell. So Roger Skunk's mummy was got angry, and she said that, "What's that awful smell?" Awful means very terrible, very bad. Oh, what's that terrible smell? What's that awful smell? What? What? Joe was surprised. What had happened? Why? She thought that the story was all over, and Roger Skunk's mummy will be very happy because because the skunk, Roger Skunk, had the beautiful and very good smell. But the story took a turn, and she was surprised. So she said, "The what?" And Roger Skunk said, "It's me, mummy. I smell like roses." And she said, "Who made you smell like that?" And he said, "The wizard." And she said, "Well, of all the nerve. You come with me, and we are going right back to that very awful wizard." She got angry. And Roger Skunk said, "It's me, mummy. I smell like roses." And but the mummy got angry, and mummy said that, "Who made you smell like that?" So he answered that, "The wizard." So she said, "Well, of all nerves," means he was, nerve means strength. And she said that, "You come with me quickly, and we are going right back to that very awful wizard. And who is the terrible wizard, and I will punish him." And she got angry. Okay. So it is the end of today's story, today's paragraph, and now it is the time of Hindi summary. And the next part of the story we will start in our next video. Okay. तो हमने इसमें पढ़ लिया था कि किस तरह से जो मैजिशियन है, जो विजार्ड है, जो जादूगर है, ये जादूगर है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो वो एक मैजिक करता है, एक जादू करता है, और अपने जादू के जो वर्ड्स हैं, उसके जो पोएम है उसको बोलता है, और रॉजर स्कंक की स्मेल को रोजेस वाली स्मेल में बदल देता है। और जैसे ही वो स्पेल करता है, वो जादू करता है, और वहाँ पर कहानी को सुनाते सुनाते जैक अचानक बीच में रुक जाता है। वो अपनी बेटी के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखता है कि किस तरह से उसके नॉस्ट्रिल्स वाइडेंड हो गए हैं, और किस तरह से उसकी आईब्रोज ऊपर की ओर खिंच गई हैं, उसका लोअर लिप्स और डाउन हो गया है, और एक बहुत ही नॉइज़लेस ग्रिन, एक ऐसी स्माइल उसके चेहरे पे आई है जिससे आवाज़ तो नहीं है लेकिन स्माइल है। और वो सरप्राइज है इस स्माइल को देख करके, इस प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख करके वो स्टार्टलेड है, जो सरप्राइज्ड है। क्यों? क्योंकि यही सेम एक्सप्रेशंस उसकी वाइफ के फेस पे भी आते थे जब वो कॉकटेल पार्टीज़ में जाती थी और अपने आप को फिनिंग प्लीजर माने अपनी खुशी को प्रिटेंड करती थी। प्रिटेंड माने दिखाती थी, बहाना बना अपने आप को खुश दिखाती थी, शो करती थी अपनी खुशी को। तो उस समय उसके चेहरे पर जिस तरह की एक्सप्रेशंस आते थे, उसी तरह के एक्सप्रेशंस उसकी बेटी के भी चेहरे पर आए हैं। वही सेम एक्सप्रेशंस हैं, और इस चीज़ को देख करके जैक बहुत सरप्राइज है। और फिर वो स्टोरी को आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि विजार्ड ने जैसे ही वो कास्ट स्पेल किया, वो स्पेल कास्ट किया, वो जादू डाला उसके ऊपर, वैसे ही उसकी पूरा घर अंदर से पूरा रोज़ की स्मेल से भर गया। क्योंकि अब इसमें स्कंक की स्मेल जो है वो रोज़ वाली स्मेल हो गई। और जो यहाँ पर जैक
रॉजर स्कंक के बजाय रॉजर फिश बोल देता है कि रॉजर फिश खुश होकर के चिल्लाया और विजार्ड ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए 7 पेनीज दो, अब इसके बदले 7 पैसे दो, 7 पेनीज। लेकिन जो थी वो इतनी इन्ग्रॉस्ड थी स्टोरी में, वो इतनी इन्वॉल्व्ड थी स्टोरी में कि उसने तुरंत नोटिस किया कि फादर ने रॉजर फिश बोला जबकि ये रॉजर स्कंक होना चाहिए। तो उसने तुरंत अपने डैडी को टोका। उसने कहा, वाह डैडी, व्हाट डैडी, रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश, आपने रॉजर फिश बोला जबकि रॉजर स्कंक है। ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, आप जैसे रॉजर फिश कह रहे हो। तो अब फादर को रियलाइज़ हुआ कि हाँ वास्तव में गलती हो गई। तो कहते, हाँ वास्तव में तुम्हारे डैडी जो है बूढ़े हो गए हैं और स्टूपिड हो गए हैं, इसलिए वो फीस निकल गया मुंह से। ठीक है, आप बताओ मैं कहानी में कहाँ था। तो वो बताती है कि हाँ आप 7 पेनीज़ पे थे कि वो 7 पेनीज़ मांगता है। वो कहता है ठीक है। तो इस तरह से वो 7 पेनीज़ मांगता है। जब स्कंक के पास केवल 4 पेनीज़ हैं, 7 पेनीज़ नहीं हैं, तो वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं। अब जो का फेस भी रोने वाला होता है क्योंकि जो तो बिल्कुल इमोशनल अटैच्ड है स्कंक के साथ। वो सोचती है मैं ही हूँ इस करेक्टर में। तो वो भी अपने फेस को रोने जैसा बनाती है, लेकिन इस समय ऑनेस्टी नहीं है उसके एक्सप्रेशंस में, ऐसा लगता है। और इस बात से जैक जो है थोड़ा नाराज़ हो गया है क्योंकि नीचे सीढ़ियों के नीचे जो उधर क्लेयर काम कर रही है, उसकी पत्नी काम कर रही है, और वहाँ से आवाज़ आती है फर्नीचर को सरकाने की। और उसको हैवी फर्नीचर नहीं सरकाना चाहिए क्योंकि वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट है। ये उनका तीसरा बच्चा है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपना तीसरा बच्चा। दो तो हैं ही, एक जो है, एक उसका भाई है जो सो रखा है, और तीसरा अब वो प्रेग्नेंट है। तो जैक इस बात से थोड़ा सा एनॉयड है कि वो भारी फर्नीचर क्यों सरका रही है, उसको नहीं सरकाना चाहिए। और तो विज़ार्ड वो आगे स्टोरी को बढ़ाता है कि विज़ार्ड कहता है ठीक है, तुम ऐसा करो कि इस लेन में, इस स्ट्रीट में आगे बढ़ो और आगे जा कर के वहाँ पर 3 बार घूमो और ऐसे राउंड 3 बार टर्न करो, एंड फिर तुम्हें नीचे दिखाई देगा एक मैजिक वेल, जादुई कुआं दिखाई देगा, और वहाँ पर तुमको 3 पैसे मिलेंगे, जल्दी करो। तो रॉजर स्कंक इसी तरह से उसको फॉलो करता है, वो आगे जाता है लेन में, 3 बार घूमता है और उसको वहाँ पर एक जादुई कुआं दिखता है, वहाँ उसको 3 पैसे दिखते हैं, 3 पेनीज मिलते हैं, और वो उनको ले करके विज़ार्ड को वापस दे देता है और बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर के घर की तरफ दौड़ता है और जंगल में दौड़ता हुआ आता है। फिर वहाँ उसको अपने सारे दोस्त मिलते हैं, छोटे एनिमल्स और बाकी हैं, और जब वो देखते हैं कि स्कंक की स्मेल तो रोज़ की जैसी है और अच्छी स्मेल हो गई है, तो वो फिर उससे दूर नहीं भागते बल्कि उसके पास आ जाते हैं और उसके साथ खेलते हैं। और वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं यहाँ पर, जैसे टैग है, एक टैग गेम का नाम लिखा हुआ है कि टैग टैग एक बच्चों का गेम होता है, चिल्ड्रंस गेम ऑफ चेजिंग, दौड़ने एक दूसरे को, इसको आप पकड़म पकड़ाई भी कह सकते हैं। तो ऐसे ये टैग है, बेसबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, लेक्रॉस है। लेक्रॉस भी एक गेम है जो कि 2 टीमों के बीच में खेला जाता है लंबी लंबी स्टिक्स के साथ में। और सॉकर है, सॉकर तो आप जानते ही हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, और पिकअप स्टिक माने स्टिक के साथ गेम खेला जाता है। तो बाकी गेम्स तो जो कि समझ में आ गए हैं, लेकिन वो पिकअप स्टिक उसने नहीं खेला है आज तक, तो तुरंत वो क्वेश्चन करती है व्हाट इज़ पिकअप स्टिक। तो फादर उसको कहते हैं कि गेम है, स्टिक के साथ खेला जाता है। अब वो स्टिक को देखती है कि स्टिक, कैसी स्टिक। तो उसको याद आता है कि मैजिक वैंड जो था विजार्ड के हाथ में, क्या क्या वैसी स्टिक जैसा मैजिक वैंड है विजार्ड के हाथ में। तो फादर कहते हैं हाँ हाँ वह वैसी टाइप का। तो इस तरह से वो फिर गेम खेलते हैं, पूरी आफ्टरनून को हंसते हैं, गेम खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत खुश हैं। और जब शाम होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तो वो फिर सब घर की तरफ दौड़ते हैं, अपनी अपनी मदर्स के पास, अपनी अपनी मम्मी के पास।
और जो अब सोचती है कि शायद स्टोरी ख़त्म हो गई है, जो को ऐसा लगता है कि स्टोरी अब समाप्त हो गई है, और वो फिर इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ हो गई स्टोरी, क्योंकि हैप्पी एंडिंग चाहिए होती है स्टोरी में। तो अब हैप्पी तो एंडिंग हो ही गई है, तो इसीलिए उसको लगता है कि यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो गई। इसलिए वो इधर उधर करने लगती है, इधर उधर देखने लगती है, और बाहर पर जो वहाँ पर धूप आ रही है उसकी तरफ देखती है। और जैक को इस तरह से जो वुमेन की आदतें होती है, इस तरह की आदतें अच्छी नहीं लगती, कि वो उनको जो बताया जाए वो उस पर ध्यान नहीं देती हैं, इधर उधर करती हैं, और जो शब्द उसको कहे जाए उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। जैक इस बात को लेकर परेशान है, और वो नाराज़ भी होता है इस चीज़ों को देख करके, कि जब किसी को कोई बात कहें तो वो उस पर ध्यान यदि नहीं दे तो नाराज़ होता है। तो उसको जो को ज़ोर से बोलता है कि तुम सुन रही हो कि नहीं है जो। अब जो थोड़ी डर जाती है, वो कहती है कि हाँ हाँ सुन रही हूँ। क्योंकि जैक कहता है कि अब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनो ध्यान से। रॉजर स्कंक जब घर पहुंचा तो उसकी मम्मी ने कहा कि ये कैसी स्मेल है तुम्हारी, ये स्मेल कहाँ से आ रही है इतनी ख़राब। अब जो भी व्हाट वो पूछता है कि क्या। तो रॉजर स्कंक कहता है कि इट्स मी मम्मी, ये मैं हूँ मम्मी, मेरी स्मेल है, मेरी स्मेल रोज़ की जैसी हो गई है। तो मदर को बड़ा गुस्सा आता है। मदर कहती है किसने बनाई तुम्हारी ऐसी स्मेल। और वो रॉजर स्कंक कहता है कि विजार्ड ने, जो जादूगर है उसने बनाई। तो मदर को और गुस्सा आता है, वो गुस्से में कहती है कि चलो मेरे साथ अभी, और चलते हैं उसी ऑफुल विजार्ड के पास। कौन है वो विजार्ड, उसने, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हारी स्मेल को बदला। क्योंकि स्कंक की जो स्मेल होती है वो उसको एनिमीज़ से बचाती है, और वो उसका एक वेपन है। दैट इज़ द वेपन टू सेव फ्रॉम द एनिमीज़। क्योंकि स्कंक को जब कोई एनिमी, उसको दुश्मन कोई पकड़ने जाता है तो वो ऐसी बैड स्मेल छोड़ देता है और अपने आप भाग जाता है। तो इस तरह से उसकी मम्मी बहुत नाराज़ है कि ये जो ओरिजिनल स्मेल स्कंक की होनी चाहिए थी वही होनी चाहिए थी, वो हमारा वेपन है, वो हमारे एनिमीज से बचने का एक तरीका है, लेकिन इसने रोजेज़ वाली स्मेल कर दी है। इसलिए वो नाराज़ होती है और उसको कहती है चलो अभी विजार्ड के पास, उसको मैं बताती हूँ। तो इस तरह से ये आज की स्टोरी, आज का जो पैरा था वो हम यहीं एंड कर रहे हैं, और आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो यहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, या मैं, चलो मैं दे दूँगा आपको बाद में क्वेश्चंस दूँगा, उसको आपको करने हैं। ओके।